नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। एंड इन द सीरीज ऑफ previous year's questions, we are discussing the questions asked in RPSC College Lecture Exam 2016. This video will be part 18, and in today's video we are going to discuss the questions 121 to 125. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हम इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूँ। तो आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय आर के नारायण इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो नॉवेल्स हमें दिए गए हैं आर के नारायण के बारे में। यू आर वेल अवेयर दैट ही इज़ अ वेरी फेमस इंडियन ऑथर। उनके नॉवेल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। नॉवेल्स हैं द इंग्लिश टीचर, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ऑप्शंस वी हैव A B C D, B A C D, C A B D and D A B C। सो इसका राइट आंसर जो है वो है A B C D, यानी कि जिस क्रम में ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं दैट इज द ओनली करेक्ट ऑर्डर। आर के नारायण के बारे में जानते हैं। आर के नारायण वॉज एन इंडियन राइटर एंड नॉवलिस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English, along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. Narayan highlights the social contexts and everyday life of his characters. He has been compared to William Faulkner, who created a similar fictional town and likewise explored with humor and compassion the energy of ordinary life. विलियम फॉकनर का जिक्र हुआ है, तो चलते चलते आपको बता दूं कि विलियम फॉकनर जो है उनको नोबेल प्राइज 1949 में दिया गया था। इंग्लिश टीचर जो है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1945, द गाइड वाज पब्लिश्ड इन 1958 एंड द गाइड वाज गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये बहुत ही फेमस वर्क है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, होप आपने देखी होगी। देवानंद ने उसमें लीड रोल प्ले किया था। Next है The Man Eater of Malgudi was published in 1961, and then The Vendor of Sweets, a very famous novel based on the theme of generation gap, was published in 1967. Let's see the next question. Pick out the option that correctly matches the writer with the book. So we have been given the list of a book and list of writers. So उनको हमें मैच करना है। The Autobiography of an Unknown Indian, My Story, Prison and Chocolate Cake, and Selective Memory. List of writers: Nayanthara Sehgal, Shobha Dey, Neeraj C. Chaudhary and Kamla Das. So right answer जो है उसको हम explanation में देखते हैं। The Autobiography of an Unknown Indian is the 1951 autobiography of Indian writer Neeraj C. Chaudhary, written when he was around 50. It records his life from his birth in 1897 in Kishoreganj, a small town in present-day Bangladesh. The book relates his mental and intellectual development, his life and growth in Calcutta. Next work, My Story, is an autobiographical book written by Indian author and poet Kamla Das. और कमला दास जो है उनको confessional poets में शामिल किया जाता है, also known as Kamla Suraya or Madhvi Kutti. The book was originally published in Malayalam titled Ante Katha, and the book evoked violent reactions of admiration and criticism among the readers and critics. It remains to date the best-selling women's autobiography in India. Next है Prison and Chocolate Cake, is the first of two early memoirs by Nayanthara Sehgal and includes her childhood experience of her family during the Indian independence movement in the 1930s and 40s. The title is based on an incident in the early 1930s when Sehgal, at age 3, witnessed police arrive to take her father to prison. At the time, the family were having chocolate cake for tea. Next work है Selective Memory, Stories from My Life, is a memoir by Shobha Dey. In this engagingly candid memoir, a woman who has been a familiar face and name to millions, although few known to her,
finally reveals the true self behind the public persona. So that's all about this question. Now question number 123. Difficult Daughters by Manju Kapoor is a story of 3 generations of women. They are, ये जो मंजू कपूर का नॉवल है डिफ़िकल्ट डॉटर, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी समरी एटलीस्ट ज़रूर पढ़ें, इनके कैरेक्टर्स, पब्लिशिंग डेट, उनके बारे में ध्यान रखें. ऑप्शंस वी हैव लीलावती, वीरमती एंड आस्था, हरजीत, वीरमती एंड आस्था, शगुना, करुणा एंड रिया, देन कस्तूरी, वीरमती एंड ईदा. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कस्तूरी, वीरमती एंड ईदा. Let's see the explanation. Manju Kapoor is an Indian novelist. Her first novel, Difficult Daughters, won the 1999 Commonwealth Writers' Prize, Best First Book, Europe and South Asia. Set around the time of partition and written with absorbing intelligence and sympathy, Difficult Daughters is the story of a young woman torn between the desire of education and the lure of illicit love. Difficult Daughters is a story of 3 generations of women. Ida, the narrator, who is a divorcee, then Veermati, her mother, who marries an already married professor for love, and Kasturi, her grandmother, who comes to terms with the difficult daughter Veermati. So ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें difficult daughter जो है वो किसको कहा गया है. So keep in mind all those facts. Next question. Which prize did Arundhati Roy win for her novel The God of Small Things? तो इसके ऑप्शंस और इसके एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2016 का, और सेम क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2022 में भी पूछा गया है अरुंधति रॉय से. इनका ईयर पूछा गया था आई थिंक, और उससे पहले 2016 में बुकर प्राइज़ पूछा गया. तो वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमें पता चल रहा है, और भी जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड छोटे एग्जाम्स हैं उनमें भी ये पूछा जाता है. तो जितने भी इंडियन वर्क्स हैं जिनको बुकर प्राइज़ मिल चुका है उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, और अगर आप अपने काम को और भी आसान करना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है कि इंडियन ऑथर्स जिनको बुकर प्राइज़ मिल चुका है, और 5 ऑथर उसमें मैंने कवर किए हैं. वी.एस. नायपॉल और सलमान रश्दी भी उनमें है, हालांकि उनको डायस्फोरिक राइटर्स में इंक्लूड किया जाता है, बट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स. सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, which prize did Arundhati Roy win for her novel The God of Small Things? Nobel Prize, Pulitzer Prize, British Book Award or Booker Prize? So we are well aware of this question. Booker Prize is the right answer, and 1997 में इनको Booker Prize मिला था. The God of Small Things is a family drama novel written by Indian writer Arundhati Roy. Roy's debut novel is a story about the childhood experiences of fraternal twins whose lives are destroyed by the love laws prevalent in 1960 Kerala, India. The novel explores how small, seemingly insignificant occurrences, decisions, and experiences shape people's behavior in deeply significant ways. Next question. Manohar Malgaonkar's novel A Band in the Ganges is about. ये क्वेश्चन फिनिश करने से पहले, ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के बाद अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई एम हैविंग फॉर यू, सो स्किप मत कीजिएगा. मनोहर मालगांवकर's novel A Band in the Ganges is about positive value of the philosophy of non-violence, the violent aftermath of the partition as a positive experience, the effects of the partition of states in India. So right answer हो जाएगा option 2, the violent aftermath of the partition. So explanation देखते हैं. A Band in the Ganges, 1964. It was published in 1964. Is a novel by the Indian author Manohar Malgaonkar. The novel opens with the civil disobedience movement of early 1930s and ends with the partition riots in Punjab. It encompasses the Swadeshi movement, the activities of freedom fighters, the outbreak of the Second World War, the British retreat from Rangoon,
the Bombay Dock explosion and the division of India in 1947. So now the time to have the interesting facts. देखिए बहुत सारे सिमिलर नेम्स के वर्क्स होते हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो मनोहर मालगांवकर का हमने ये देखा अ बैंड इन द गंगेज. इट वाज पब्लिश्ड इन 1964 एंड जो इसका लिटरेरी जॉनर है वो है नॉवल. सिमिलर एक वर्क है अ बैंड इन द रिवर दैट इज रिटन बाय V.S. नायपॉल. इट वाज पब्लिश्ड इन 1979. इट इज़ ऑल्सो अ नॉवल. एक और छोटी सी जानकारी आपको दूं कि V.S. नायपॉल जो हैं उनको 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था. एंड अ बैंड इन द रोड ये निकोला स्पार्क का एक नॉवल है. इट वाज पब्लिश्ड इन 2001 और निकोला स्पार्क जो है इज़ एन अमेरिकन ऑथर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद अस. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.